Okay. So this is the another special case in which we have to calculate the capital gains in case the person has converted his personal assets into the stock in trade of the business. Already discussed regarding what all are the transactions which are considered as transfer under section 2 subsection 47. In that particular case we discussed this section 45(2) that in case there is any conversion of personal assets into stock in trade of the business, then we have to calculate the capital gains. So profit or gains arising from the transfer by way of conversion by the owner of a capital asset or its treatment by him as stock in trade of a business carried on by him shall be chargeable to income tax as his income of the previous year in which such stock in trade is sold or transferred by him. So it means calculation of capital gains will happen in the previous year when such converted stock in trade is sold. Okay, या फिर otherwise transferred. हमने transfer के cases already we have discussed so far. So calculation तब होगी. Ma'am, the screen is not visible. Is it not? Ma'am, it's visible. Visible है ना? Because I have shared my screen. एक बारी just check your internet connection. ठीक है, or the fair market value of the asset on the date of such conversion or treatment shall be deemed to be the full value of the consideration received. ठीक है, जब हम calculation करते हैं we need the sales consideration, right? So sales consideration क्या होगी? That will be the fair value of the assets on the date of जो जिस डेट पर कन्वर्जन हुई है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज द सेल्स कंसिडरेशन. उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड देन वी गेट आवर गेन्स. Indexation of cost of acquisition and improvement if required, it will be done in the previous year in which such conversion took place. तो सेम केस है हमारा इंश्योरेंस कंपनसेशन जैसा ही कि ट्रांसफर तो हमारा तब तक है जहां जब कन्वर्जन हो गया, ठीक है, बट कैलकुलेशन विल टेक प्लेस व्हेन द स्टॉक इन ट्रेड इज एक्चुअली सोल्ड ऑफ और ट्रांसफर्ड बाय द ओनर. ठीक है, सो सेम उसी लाइंस पे है ये भी. So in this case, in this case, index cost of acquisition will be cost of acquisition divided by CII of the year of acquisition multiplied by CII of the year in which asset is converted. ठीक है, तो जब sold हो रहा है जब calculate कर रहे हो, but indexation कब तक कर रहे हो? जब तक वो convert हो रहा है. ठीक है, same हमारा compensation वाला जैसा केस होता है. And the other point is, in case there is any profit is earned on the sale of stock, then it is considered as a business income. कि जब आप स्टॉक इन ट्रेड को बेच रहे हो, जो एक्चुअल में आपके पास पैसा आ रहा है, उसका जब आप डिफरेंस निकालोगे, दैट इज योर बिजनेस इनकम. दिस इज नॉट योर कैपिटल गेन. ठीक है, क्योंकि इस कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में हम फुल कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू को ले रहे हैं, ना कि उसकी एक्चुअल सेल वैल्यू को. और जब हम एक्चुअल सेल वैल्यू को व्हेन वी कंपेयर विद द कॉस्ट, देन वी कैलकुलेट बिजनेस इनकम, नॉट कैपिटल गेन्स. ये आपको बहुत आसानी से इस एग्जांपल के थ्रू समझ आ जाएगा. सो मिस्टर एक्स परचेज्ड 1 kg गोल्ड फॉर रुपीज 7 lakhs on 1st July 2010. On 15th January 2020, he starts the business of goldsmith and converts the gold into inventory. On that date, the market value of the gold was 19 lakh. The gold was sold in March 2020 for rupees 25 lakhs. Calculate his capital gains and business income. Okay. So for the purpose of capital gains, we know that on 15th January 2020, the conversion has taken place, right? So the transfer of the asset is happening on 15th of January 2020. So period of holding will start from 1st July 2010 till 15th January 2020. And it is greater than 36 months because in this case, gold is a capital asset.
and आपका 36 months का rule चलेगा. So in any case you have to calculate the long term capital asset. Now we know that the fair market value on the date of conversion is 19 lakhs. So we have got our full value of consideration. So sorry. So sale consideration is 19 lakhs. There is no selling expenses, so nil. Net sale consideration 19 lakhs. Then you have to calculate the indexed cost of acquisition. So cost of acquisition कितनी है आपकी 7 लाख. कौन सा फाइनेंशियल ईयर है 10-11. So CII of financial year 10-11 is 167. Multiply by the CII of the year in which the conversion has taken place. So conversion कब हुआ है आपका 15th January 2020, which is falling in financial year 1920, right? So it is 289. So when you multiply this, you will get this figure. Now you can just simply subtract this from your net sales consideration. So 6,623 long term capital gain. Clear है capital gain का concept? That जो भी आपकी fair market value होगी on the date of conversion, that will be considered as your sale consideration, and then whatever cost you have incurred while procuring that asset, that you can index. ठीक है? But transfer हमेशा जो CII होगा, that will be the year in which such conversion has taken place, ना कि जिस साल में उसकी sold off हुई है. ठीक है? इस case में it is lying in the same year, but there might be a case in which might be the conversion has taken place in financial year 18 and 19, and might be this inventory stock has been sold in 1920. So अगर ऐसा कोई case होगा तो यहाँ पे फिर 18-19 का ले लेना. ठीक है? वैसे मैंने notes में specifically mention कर दिया है. Now the next step is we have to calculate the business income, right? Capital gain तो हमारा done है. अब business income में actual में gold March 2020 में कितने का sell off हुआ है? 25 lakhs का. So now you can simply subtract this cost of inventory, that is the fair market value of your inventory, from your sale consideration. So 6 lakhs is your business income. क्योंकि जब आपने कन्वर्जन किया अपना स्टॉक इन ट्रेड का, तो जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी वो अब बिजनेस इनकम के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है. ठीक है? सो सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज योर बिजनेस इनकम. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, दोनों कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कब हमें कैसे कैपिटल गेन का इसमें कैलकुलेट करना और कैसे बिजनेस इनकम कैलकुलेट करनी. शुड आई मूव टू द नेक्स्ट स्पेशल केस? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. Hello. Now we'll move to the next case. So this is section 45 subsection 3, which is transfer of assets by partner, member to partnership firm, association of person, body of individual as capital contribution. So in case any asset is transferred by the partner or by a member in order to become a partner, or if he is already a partner or a member of that particular firm. So any kind of transfer of asset is happening between the partner and between the partnership firm as his capital contribution. आपको पता है कि capital contribute करते हैं partners as well as members. So अगर उसमें कोई भी asset का transfer हो रहा है, in that case also we have to calculate the capital gains. So the profit or gains arising from the transfer of capital asset held by a person to a firm, association of persons, body of individual, not being a company or cooperative society. ठीक है? So this is applicable only in case of partnership firm, association of persons and body of individuals, in which he is or he becomes a member or a partner. So the capital gain will be calculated for such person in the previous year in which transfer has taken place. ठीक है? जिस साल में ट्रांसफर होगा उस साल में आप कैलकुलेट करोगे, एंड जो सेल कंसिडरेशन होगी
that will be taken as the value of the asset recorded in the balance sheet. So जो भी आपने asset transfer किया है, जो उस firm की balance sheet में जो, that will be considered as your sale consideration. It means you have to ignore the market value. ठीक है? So sale consideration होगी आपकी, whatever amount of that asset is recorded in balance sheet, and the cost of acquisition, you already know how you can calculate the cost of acquisition. जो indexing है वो सारी आपकी same चलेगी, but आपका CII of the year of transfer लिया जाएगा जिस साल में actual में transfer हुआ है. So this is an example. Mr. X acquired a property by way of a gift from his father in previous year 67, when its fair market value was rupees 3 lakhs. The father has acquired the property in the previous year 2003-4 for rupees 9 lakhs. This property was introduced as capital contribution to a partnership firm in which Mr. X becomes a partner on 5th June 2019. The fair market value of the asset as on 5th June 2019 was rupees 20 lakhs, 24 lakhs, and that we know that we have to ignore it completely. But it was recorded in the books of account for rupees 25 lakhs. So this information is important to us. We have to calculate the capital gain. ठीक है? सबसे पहला तो होता है हमारा concept is to check about all these conditions कि asset, capital asset है, transfer है, period of holding. So property definitely is our immovable property, so it is an asset. Transfer भी हो रहा है definitely. First case में by gift के form में हो रहा है, दूसरे case में क्या हो रहा है? By way of transferring the asset as a capital contribution. तो उस case में हमारा दोनों केस में ट्रांसफर है, बट जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा दैट विल बी द कॉम्बिनेशन. ठीक है? क्योंकि हमारा प्रीवियस ओनर कंसेप्ट आ रहा है इसमें. रिमेंबर, जब भी हमारा किसी और के थ्रू ट्रांसफर होता है और जो कंडीशंस आर कंसिडर्ड एज नॉन ट्रांसफर कंडीशंस, उन कंडीशंस को में हम हमेशा प्रीवियस ओनर की होल्डिंग को भी कंबाइन करते हैं. तो इसमें बाय वे ऑफ अ गिफ्ट हुआ है फ्रॉम हिज फादर टू हिज सन. तो फादर वाज द प्रीवियस ओनर, सो वी हैव टू कंबाइन हिज period of holding, and then we have to combine Mr. X period of holding, and in any case it is greater than 24 months, which is the requirement of your immovable property. So if it is greater than 24 months, it means it's a long term capital asset. So every time make a habit of solving question like this. First you have to calculate all such things, and then you have to calculate the nature, otherwise your marks will be deducted. ठीक है? हमेशा क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना. ठीक है? और ट्रांसफर when he has actually transferred his asset in the form that is on 5th June. So हमारे पास फाइनेंशियल ईयर भी हमें पता है 1920 में ट्रांसफर हुआ है. After this is done, now it is very simple. First we'll write out about the value of the asset in the balance sheet, that is rupees 25 lakhs. There is no selling expenses, so it is nil. So net sales consideration is 25 lakhs only. Now next is the cost of acquisition. So cost of acquisition कितने की खरीदी थी उसने? He has purchased this property in 2003 for rupees 9 lakhs. So इसकी cost थी जो X के लिए 3-4 में वो थी 9 lakhs. और हम previous owner में यही करते हैं कि जो actual cost होती है हम उसी का indexation करते हैं. So 3-4 में it was 9 lakh. You will divide by this with the CII of the year of 2003 and 4, which is 109, and you multiply with the year in which the transfer has taken place. So transfer has taken place in 1920. So we'll multiply this by 289. So this is your answer. That is 23,86,239. And when you subtract this, you will get this long-term capital gain. 1,13,761. ठीक है? तो यूजुअली आपके क्वेश्चंस इतने ही ऐसे ही आते हैं जिसमें आपकी 2-3 चीजों की टेस्टिंग होती है. जैसे अगर इसी में एक और इम्प्रूवमेंट का केस भी आ जाता तो आपकी इम्प्रूवमेंट कंसेप्ट की भी टेस्टिंग हो जाती. तो यूजुअली क्वेश्चंस आपके इतने वाइडर ही आते हैं जिसमें प्रीवियस ओनर, इम्प्रूवमेंट एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल केस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है.
सॉरी, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? कंसेप्ट क्लियर है सबको? Should it not be 3 lakhs? नहीं बेटा, ये फेयर मार्केट वैल्यू है 2006-7 की, व्हेन ही ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ अ गिफ्ट टू हिज सन। फादर ने 6-7 में इसको ट्रांसफर किया, बट प्रीवियस ओनर इसका फादर ही था, और प्रीवियस ओनर के टाइम पे प्रीवियस जो कॉस्ट थी जो उसके फादर ने इनकर्ड करी थी, दैट वाज रुपीज 9 lakhs। तो आपकी 9 लाख ही आएगी इसमें, नॉट 3 lakhs। आपने प्रीवियस ओनर का कंसेप्ट दोबारा जाके रिवाइज करना। जो प्रीवियस ओनर होता है उसने जब वो प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है वो लेते हैं। अगर ये वैल्यू, अगर ये सॉरी प्रीवियस ईयर 2001 एंड 2 से पहले का होता और आपको मार्केट वैल्यू 2001 और 2 की दी होती, तो उस केस में डेफिनेटली आप 2001 और 2 की वैल्यू ले लेते, विच एवर इज हायर। बट इन दिस केस यू कांट टेक एनी अदर वैल्यू। Whatever the father has actually incurred in terms of acquisition of that property, that amount is the exact amount that you have to take in your answer. ठीक है, 3 lakhs is just to confuse you कि जब कन्वर्ट किया that was the fair market value. इसमें आपको ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, सो प्रीवियस ओनर के कंसेप्ट में हमेशा याद रखना, जब प्रीवियस ओनर ने उसको एक्वायर किया है वही कंसिडर होगा आपके। अगर इसमें और सक्सेसिव ट्रांसफर होते ना इनहेरिटेंस के, फॉर एग्जांपल इसमें कोई ग्रैंडफादर भी होता इसी क्वेश्चन में कि ग्रैंडफादर से फादर को गई, फादर से सन, तो इन दैट केस आल्सो आप ग्रैंडफादर की निकालते, फिर उसमें फादर की नहीं निकालते। प्रीवियस ओनर हमेशा लास्ट ओनर होता है जिसकी प्रॉपर्टी खरीदी हुई होती है। ठीक है, किसी और को कोई डाउट है? शुड वी मूव टू नेक्स्ट स्पेशल केस? So this is your next special case in which asset is transferred by firm to partners in case of dissolution of partnership firm. So अगर आपकी firm is going to dissolve and in that process any kind of transfer of asset has taken place. Dissolution में क्या होता है, आप realization account बनाते हो, उसके बाद आप surplus देखते हो, क्या होते हो। अगर इसी process any asset is being transferred by the firm in order to discharge whatever the capital the partner has contributed, so अगर कोई भी आप amount अगर उसको transfer कर रहे हो, so वो case आपका transfer consider किया जाएगा। ठीक है, and in that case you have to calculate the capital gains, and this is applicable when partnership firm is dissolved and not just when partnership is dissolved. There is a lot of difference between partnership firm and partnership. Partnership आपकी बहुत बार dissolve होती रहती है because it is made by an agreement, और agreement में there are lot of times when there are many changes taken place, right? Partnership deed होती है। So partnership dissolve होना doesn't mean partnership firm भी आपकी dissolve हो रही है। जब तक आपकी firm is not dissolved तब तक आप capital gains calculate नहीं करोगे। ठीक है, so जब question में specifically mention है that the firm is getting dissolved, in that case it means you have to check whether there is any transfer of asset has taken place between the firm and the partner, and in case yes, then you have to calculate the capital gain. So dissolution of capital asset by a partnership firm to partners at the time of dissolution is treated as transfer, and capital gain is taxable in the hands of the firm, क्योंकि कौन कर रहा है ट्रांसफर, आपकी फर्म ट्रांसफर कर रही है। The fair market value of the asset on the date of distribution is to be taken as full value consideration. It means जो भी आप असेट को ट्रांसफर कर रहे हो उसकी उस पर्टिकुलर डेट पे फेयर मार्केट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज द सेल कंसिडरेशन, नॉट द रिकॉर्डेड वैल्यू। ठीक है, सो ये इसका उल्टा हो गया। इससे पहले वाले में आपको रिकॉर्डेड कंसिडर करनी थी और फेयर नहीं करनी थी वैल्यू। इस केस में क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू यू हैव टू कंसिडर एंड यू डोंट हैव टू कंसिडर द रिकॉर्डेड वैल्यू। ठीक है, दिस रूल इज आल्सो एप्लीकेबल when an asset is transferred by association of person or body of individual.
So the same rule as it is applicable to the partnership firm, the same rule is applicable to association of persons and body of individuals as well. तो हमेशा देखना डिसोल्यूशन हो रहा है अगर इन तीनों के केस में, तो असेट ट्रांसफर मींस कैपिटल कैलकुलेट करना है. Then if later on partner further transfers the assets, then capital gains will be calculated for that partner, and for him the cost of acquisition will be taken as the capital surrendered by him in the partnership firm. जो भी सॉरी जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी ओनर की, वो उसकी क्या होगी, एक्चुअल में जो उसने कैपिटल सरेंडर कर दिया है फर्म में, क्योंकि आपकी फर्म डिसॉल्व हो चुकी है एंड वट एवर असेट इज बीइंग गिवन टू यू, उस असेट के बदले में आपने जो अपनी कैपिटल सरेंडर करी है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. और आपकी इसमें सेल कंसिडरेशन तो डेफिनेटली वही होगी जितने पे वो सेल ऑफ कर रहा है जो पार्टनर था. ठीक है, सो एग्जांपल के थ्रू वील अंडरस्टैंड दिस बेटर. So suppose this is the balance sheet of partnership firm of ABC. Okay, so this is the balance sheet in which this is the liability, capital and liability side, this is your asset side. So this is capital A 30 lakh, B 30 lakh, C 30 lakh, liabilities 10 lakh, so total 100 lakh. यहाँ पे investment in shares means the company has invested in certain shares जिसकी fair market value है 34 लाख and recorded value है 17 lakhs. ठीक है, क्योंकि हम हिस्टोरिकल प्रिंसिपल के बेस, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के बेस पे रिकॉर्डिंग करते हैं. सो जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होगी उस टाइम वैल्यू उसकी 17 lakhs थी, तो 17 lakhs है. अदर असेट्स आर 83 lakhs. ओके, द पार्टनरशिप फर्म गेट्स डिसॉल्व्ड ऑन 15th January 2020 and all investment in shares is given to Mr. A. These shares were purchased on 1st January 2017 by the firm. ठीक है, so we know that these were purchased in 1st January 2017. Mr. A further sells these shares for rupees 35 lakhs in March 2020. Calculate capital gain for firm and for Mr. A. So सबसे पहले हम Mr. फर्म के लिए निकालते हैं. So sale consideration is the fair market value that we have already discussed. कि फर्म के केस में recorded you don't have to consider, you have to consider the fair market value. Recorded क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि recorded is the actual cost of acquisition. इसने 1st January 2017 को फर्म ने खरीदी थी कितने में, आपकी बैलेंस शीट हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे होती है, तो उसने 17 लाख की खरीदी थी, राइट. सो आप इसमें से 17 लाख कब खरीदी थी इसने, 1st January 2017. So when you calculate the period of holding from 1st January to 17 to 15th January 2020, it is greater than 36 months. ठीक है, और वैसे भी it is a shares, तो शेयर्स की इन्वेस्टमेंट का रूल हमेशा आपका 24 मंथ होता है when it is not listed in recognized stock exchange, और listed होता है it is 12 months. So in any case it is greater than 36 months, so it is a long term capital asset. ठीक है, मैंने सॉल्यूशन में लिखा नहीं है but you can analyze from. ठीक है, period of holding is greater than 36 months. ठीक है, तो हमारा फेयर मार्केट वैल्यू 4 लाख से ऑफ एक्विजिशन कितना है 17 lakhs, और कब किया है एक्वायर, ऑन 1st January 2017, means CII of the year of financial year 16-17. जो CII है 16-17 का, that is 264 multiplied by the CII of the year in which the transfer has taken place. So transfer हुआ है आपका financial year 19-20, so 289 से multiply कर दोगे. So when you solve this, this is your long term capital gain. ठीक है, so this is for the partnership firm कि सेल कंसिडरेशन आपका फेयर मार्केट वैल्यू होगा एंड वट एवर द कॉस्ट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट दैट इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है, और ईयर हमेशा मेंशन होगा. नेक्स्ट आता है आपका रिगार्डिंग टू द पार्टनर. अब देखो पार्टनर जो था ए को ट्रांसफर हुआ है, कितने का ए को ट्रांसफर, हाँ उसकी कैपिटल कितनी थी 30 lakhs की. सो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इट इज हिज कैपिटल विच ही हैज सरेंडर्ड, राइट. तो इसमें क्या हो जाएगा
35 lakh is the sale consideration because this is the amount for which he has sold off minus cost of acquisition. So cost of acquisition is the actual capital surrendered by him. So in this 5 lakh will be the long-term capital gain for Mr. A. Sorry. क्लियर है सबको ये कि इसके लिए, क्योंकि इसको एक्चुअल में कोई एक्विजिशन तो पड़ी नहीं है, इसको बस इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ट्रांसफर हो गए, बट इसने अपनी कैपिटल जो सरेंडर करी है वो अज्यूम किया जाता है कि वो कॉस्ट इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है किसी को? Any doubts? Chalo. So this is the next concept and this is very important. Usually इसमें से question आ जाता है. So this is the compulsory acquisition of capital asset and this is given under section 45 subsection 5. ठीक है? तो section 45 subsection 5 specifically deals with compulsory acquisition of capital and the conditions to be satisfied by any transaction to fall under this section are as follows. So these are the conditions that compulsory acquisition has taken place. Means compulsory acquire है, कोई option नहीं give, जो owner है उससे compulsory acquire करिए property by any lawful authority, कोई ऑप्शन नहीं दिया है उसको. सेकेंड इज कंपल्सरी एक्वायर्ड असेट मस्ट बी अ कैपिटल असेट अदर देन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का डिफरेंट ट्रीटमेंट है, तो उसको छोड़कर वो असेट शुड बी अ कैपिटल असेट. ठीक है, तो पहले देखना है कि असेट कैपिटल असेट है या नहीं है. कंपनसेशन thereof has determined or approved by central government or the RBI. That in case of compulsory acquisition, the compensation must be determined by the central government or by the RBI. Any court, tribunal or other authority has the right to enhance the compensation if necessary. ठीक है कि in case the person is not satisfied with the compensation decided by the central government or by any authority, then he can file a case in the court in order to demand the compensation. Okay, so in case any of the all of these conditions are satisfied, it means there is a compulsory acquisition of capital asset and we have to calculate the capital gain. So in that case, the compensation fixed by the government, ये जो fixed word है ना, this is very important. Whatever the compensation fixed by the government will be regarded as the sales consideration. So it is immaterial how much amount the person has actually received. Okay, so many a times the government, for example, fix 50 lakhs of compensation will be given to the person in case of acquisition of his land. So जरूरी नहीं होता कि वो 50 लाख एक साथ मिल जाए. Sometimes it happens, एक बारी 10 मिल गया, एक बारी 15 मिल गया, एक बारी 25 मिल गया, ऐसे ऐसे installments में आता है. But when you calculate the capital gain, in that case sale consideration will be the entire amount which is fixed by the central government or the RBI, whatever the case may be, and you don't actually consider how much amount is actually received by the person. ठीक है? The next important point is capital gains will be calculated in the year in which compensation or installment of compensation is received. Okay, so in the year in which the entire compensation or any part of compensation is received, उस ईयर में ही आप कैलकुलेट करोगे, इससे पहले आप कैलकुलेट नहीं करोगे. भले ही पहले एक्वायर हो गई है, गवर्नमेंट ने फिक्स भी कर दिया है, बट जिस साल आप एक्चुअल में अमाउंट रिसीव करोगे, चाहे वो पूरा हो चाहे इंस्टॉलमेंट हो, जिस साल आप करोगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर प्रीवियस ईयर इन विच द कैपिटल गेन्स हैव टू बी कैलकुलेटेड. But the asset is deemed to be transferred in the year in which the orders of acquisition has been passed.
ठीक है, सो ये वही आपका कंसेप्ट हो गया जो हम पहले कर रहे थे कि कैलकुलेट तो तब करोगे जब रिसीव होगा आपको कंपनसेशन, बट ट्रांसफर तब तक का है जब तक ऑर्डर नहीं पास हो जाता। जैसे ही ऑर्डर पास हो गया एक्विजिशन का, इसका मतलब इसके बाद अब आपकी होल्डिंग खत्म हो गई है उस असेट से, तो आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी एंडिंग ऑन द डेट व्हेन द ऑर्डर इज पास्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द एक्विजिशन। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल है, इसके थ्रू अच्छे से समझ आएगा आपको। Delhi government has compulsory acquired the plot of Mr. X for the construction of Delhi Metro. The order for acquisition was passed in January 2019 and compensation was fixed at rupees 50 lakhs, out of which 30 lakhs was received on 15th July 2019 and rupees 20 lakhs was received on May 2020. The plot was purchased by Mr. X in 2010-11 for rupees 25 lakhs. Calculate his capital gain. Okay. So now in this case, land is a capital asset. Compulsory acquisition हुआ है. Period of holding is starting from financial year 10-11 till the order of acquisition was passed. So it was in financial year 18-19, right? January 2019 is falling between 18-19. So when you calculate the period of holding, it is definitely more than 24 months because plot आपका immovable property है. So 24 months से ज़्यादा है, it means you have to calculate your long term capital gain. So long term capital gain में आपकी full value of consideration is the amount which is fixed by the government. Amount कितना fix किया है? 50 lakhs. ठीक है, और रिसीव कब हुआ है? पहला 30 लाख रिसीव हुआ है 15 जुलाई 2019. इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 कैपिटल गेन्स निकालने हैं क्योंकि पहला अमाउंट रिसीव आपका 19 में हुआ है, 1920 में हुआ है. ठीक है, सो फाइनेंशियल ईयर 1920 में हम कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारी फुल वैल्यू कंसिडरेशन है पूरी 50 लाख. भले ही आपको 30 लाख रिसीव हुए हैं और 20 लाख आपको अगले साल रिसीव हुए हैं, बट आप जो भी फिक्स किया है गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा आप फुल वैल्यू कंसिडरेशन ले लोगे. सेलिंग एक्सपेंसेस निल है. इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्लॉट कब परचेज किया आपने? 10-11 में फॉर रुपीज 25 lakhs. So 25 lakhs is your cost. Divide by CII of the year of 10-11. So it is 167 into CII of the year in which transfer has taken place. Transfer कब हुआ है? When the order for acquisition has been passed. और order of acquisition कब आपका? In January 2019, which is financial year 18-19. So 18-19 का CII is 280. ठीक है, आप कैलकुलेट 1920 में इसलिए कर रहे हो क्योंकि कंपनसेशन 1920 में आया है, बट ट्रांसफर कब हो गया आपका? जब आपका असेट के एक्वायर का ऑर्डर पास हो गया. सो इट इज इन फाइनेंशियल ईयर 18-19. सो इट इज 280. व्हेन यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट इज 8,08,383. ओके, yes, for the next year, although you have received 20 lakh rupees of compensation, you don't have to calculate any capital gain and your tax liability in terms of capital gain will be nil. ठीक है, एक ही बारी कैलकुलेट करोगे उसको, बट एक ही बारी में सारा कैलकुलेट कर दोगे. ठीक है, सो कमिंग इयर्स में कितना भी फिर कंपनसेशन मिलता रहे उसको दोबारा. ठीक है, कोई डाउट हो तो बेटा अनम्यूट करके साइमल्टेनियसली पूछ लेना क्योंकि इसके 3-4 पॉइंट्स और हैं तो मैं डिस्कस करती रहूंगी. कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट पे चलूं फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे. So regarding fourth point, if government pays interest along with compensation, ठीक है, usually what happens in case the compensation is fixed but it is received in installments, so this is a case of delayed payments from the government side. So in case of delayed payments, usually government gives some kind of interest.
along with the delayed installments. So if this is the case, then such interest amount will be taxable in the year of receipt of interest under the head income from other sources under section 56. So जो भी interest आएगा in case of delayed installments, that will be taxable under the head income from other sources under section 56, but under 57 section 50% of such amount will be allowed as deduction and only remaining 50% is taxable. जो इंटरेस्ट है वो एंटायरली गवर्नमेंट टैक्स करती है, वो कहती है कि 50% का आप डिडक्शन ले सकते हो, ऑल्दो इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द पर्सन, it is actually the fault of the government who is paying the delayed installments, and for in order to compensate that delayed payments they are giving us the interest. But whatever the interest you get, this is the general rule कि जो interest आता है it is taxable under the head income from other sources. तो गवर्नमेंट उसमें कहती है कि ठीक है इंटरेस्ट का 50% आपको टैक्स लगेगा, 50% की आप डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है. So suppose इसी एग्जाम्पल में दिल्ली गवर्नमेंट हैज पेड इंटरेस्ट ऑफ ₹1,50,000 in July 2020 along with सेकेंड इंस्टॉलमेंट. ठीक है, आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी 20 लाख की, है ना. तो सपोज क्वेश्चन में ऐसा है कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट 20 लाख की है और उसके साथ साथ 1000 का इंटरेस्ट भी दे रही है, और कब दे रही है, जुलाई 2020 में, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2021. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रिगार्डिंग एड टू द एडिशनल कंपनसेशन, कैपिटल गेन तो होगा नहीं, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2021 में. बट अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का जरूर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. सो इन दैट केस इट विल बी interest received under section 56 1,50,000, and out of which under section, sorry, it should be 57, so you'll get a deduction under section 57 at the rate of 75,000. so taxable income from other sources is 75,000. यहाँ पे subtract का साइन होगा बेटा, 1,50,000 minus 75,000 is equals to 75,000. ठीक है. so this is how in case क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी मेंशन है तो इट मींस कैपिटल गेन्स में तो कुछ नहीं करोगे, बट जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकालोगे उसमें इसका ट्रीटमेंट आ जाएगा. एंड यूजुअली आपके क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर इंडिविजुअल जिसमें होता है, उसमें सारे 5 हेड्स के कुछ ना कुछ पार्ट एक साथ दिए होते हैं. तो जब भी ऐसा केस कोई आएगा तो आपको पता है कि इस केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी कुछ अमाउंट आपको डालना पड़ेगा. ठीक है. So this is your fourth point. After that, next point is, if the person is not satisfied with the amount of compensation, then he can file a case in the court demanding additional compensation. If the court grants him additional compensation, then such amount will be taxable as capital gain in the year in which such additional compensation is received. So even if installment is received, then only installment is taxable. This is very important point, which is also sometimes confuses the students, because for the main compensation, that is the initial compensation, उस केस में हम कहते हैं कि चाहे एक इंस्टॉलमेंट हो चाहे 2 इंस्टॉलमेंट हो, whatever the installment is case, जब भी हमारा पहले साल में कुछ भी अमाउंट रिसीव होगा, हम पूरा का पूरा अमाउंट जो फिक्स किया गवर्नमेंट ने, पूरा का पूरा सेल कंसिडरेशन ले लेंगे, राइट. हम यही अज्यूम करते हैं. बट एडिशनल कंपनसेशन में जितना अमाउंट रिसीव होगा उतनी अमाउंट पे ही यू हैव टू पे द टैक्स. ठीक है. सो सपोज एडिशनल कंपनसेशन फिक्स्ड बाय द कोर्ट इज ₹20 लाख. 10 लाख अगले साल रिसीव हुआ, उससे अगले साल 10 लाख रिसीव हुआ, तो अब आप 10-10 लाख पे ही लगाओगे कि जिस साल 10 हुआ 10 लाख पे कैपिटल गेन, अगले साल जब 10 लाख है 10 लाख पे कैपिटल गेन. अब आप पूरा का पूरा जो कोर्ट ने फिक्स किया 20 लाख, उस पे टैक्स नहीं लगाओगे. So this is very important point to note here, इसलिए मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया इस नोट को कि एडिशनल कंपनसेशन में इंस्टॉलमेंट पे ही टैक्स लगेगा. ठीक है. एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स फॉर एडिशनल कंपनसेशन, the cost of acquisition or the cost of improvement is to be taken as nil. This is very understood from the fact that we have already subtracted this cost of acquisition or the improvement from our initial compensation.
तो अगर यही मैं एग्जांपल लूं तो 50 लाख जब हमने किया था उसमें हम ऑलरेडी इसको सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। तो अगर कोई एडिशनल कंपनसेशन मिलता है हम दोबारा से इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। Expenses in the court will be regarded as selling expenses and will be allowed to be reduced for the calculation of capital gains. So in case any expenses which has been occurred by the person in the court, that will be allowed to be reduced from your whatever compensation you are getting, and it can be treated as your selling expenses. The nature of capital, this is very important, that the nature of gains will be the same as that of your original कैपिटल असेट। सो जब आपने इनिशियल निकाला उस टाइम जब आपने देखा कि इट इज अ लॉन्ग टर्म, तो मतलब एडिशनल के केस में भी इट विल बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। आपका इनिशियल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो एडिशनल भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। और ये नेचर इसलिए सेम रखा जाता है बच्चे बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट टैक्स रेट्स फॉर दीज थिंग्स। लॉन्ग टर्म का डिफरेंट स्कीम है कैलकुलेट करने का, शॉर्ट टर्म का डिफरेंट है। तो इसलिए जो आपका ओरिजिनल nature है that same you have to consider in case of additional compensation as well. ठीक है? So suppose in the same example Mr. X files a case in Rohini court demanding additional compensation of rupees 25 lakhs. Okay, and the court grants him additional compensation of rupees 18 lakhs only. ठीक है, उसने फाइल कितने का किया था कि मुझे 25 लाख और दो, इनिशियली इसको 50 लाख मिले थे, तो इसने और फाइल किया केस कि मेरे को 25 लाख और दो, बट कोर्ट ने एग्री किया कि इसको 18 लाख मिलेंगे, आउट ऑफ विच 10 lakhs are paid by Delhi government on 24th January 2021 and balance on 24th July 2021. तो ये तो हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर 2021। दिस जो दूसरे वाला है 24 जुलाई 2021, दिस इज योर फाइनेंशियल ईयर 21-22। ओके, नाउ सेल कंसिडरेशन। अब इसमें जितना अमाउंट रिसीव होगा एडिशनल का उतना ही टैक्सेबल होगा। सो 10 लाख आए थे आपके 24 जनवरी 2021 को और बाकी के 8 लाख आए थे आपके 24 जुलाई 2021 को। सेलिंग एक्सपेंसेस निल है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है, सो दिस इज योर एंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पूरा 10 लाख आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और इस ईयर में पूरा 8 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, सो whenever the additional compensation things comes up, always tax the amount which is received and cost of acquisition will be nil and the nature of the capital gain will be same. So in this case it is long term capital gain only. ठीक है, उसके बाद next important point is suppose the person loses the case in the court. ठीक है, उसने क्लेम किया for additional compensation and instead the compensation which is decided earlier that has been reduced by the court. ठीक है, कि compensation actual में उसका reduce होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ reduce हो गया है then the capital gains will be recalculated again in the year in which the court case is lost. ठीक है, so ये बहुत ही आसान है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आएगा। Assume in the same example पहले 50 लाख कंपनसेशन दिया, उसके बाद क्या था, उसने केस फाइल किया, उसको 18 लाख का और मिला, राइट। 18 लाख में से 10 लाख उसको रिसीव हो गया इन फाइनेंशियल ईयर 2021, बाकी 8 21-22 में। अब सपोज इन द सेम एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट हैज फाइल्ड एन अपील इन दिल्ली हाई कोर्ट, उसने रोहिणी कोर्ट में किया था against the orders of the Rohini court and subsequently Delhi High Court has decreased the additional compensation from 18 lakhs to 10 lakhs instead. ठीक है, उसने रोहिणी कोर्ट ने 18 लाख किया था, उस 18 से अब 10 लाख कर दिया आपके दिल्ली हाई कोर्ट ने, and the court has passed the order in January 2024. It means your financial year 23-24 will be applicable and the expenses in the court are rupees 50,000. So these are the expenses of the court which is allowed to be reduced. ठीक है, so now we have to recalculate the capital gains again for the assessment year 1920. So although it is assessment year, it is applicable for assessment year 1920, but we are recalculating and usually
हम लोगों के पास ये प्रोविजन होता है कि इन केस एनीथिंग लाइक दैट कम्स अप, बीन पास्ड, इन दैट केस आप लोग दोबारा से फाइल कर सकते हो। ठीक है, आपका एक्सेसिंग ऑफिसर या तो वो आपका दोबारा से रिकैलकुलेट करेगा या आप रिकैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें रिकैलकुलेट क्या होता है, 10% and as your obligation addition when you add them up it is 60 lakhs. Selling expenses कितने हैं आपके, these are 50,000. So when you subtract this, 59 lakh 50,000 is your net sale consideration. Now the indexed cost of acquisition, this we have already calculated. This is same because जब उसने खरीदा उसके आप जब indexation करोगे it is same only which we have done in our third example, जो हमारा third point के बाद example था. And now this is your actual long term capital gain. ठीक है, सो अब आप दोबारा देख लोगे कि आपने 23-24 में जब आपने रिकैलकुलेट किया तो आपका ये तो कैलकुलेशन हुई नहीं क्योंकि ये रिसीव ही नहीं हुआ उसको, क्योंकि जैसे 18 लाख का पास हुआ दिल्ली गवर्नमेंट ने दोबारा से ऑर्डर पास कर दिया. सो अब ये सेकंड एग्जांपल आपको कंसीडर नहीं करना, फर्स्ट एग्जांपल में चलो अपने. सो फर्स्ट वाले एग्जांपल में 8,0383 was the long term capital gain for that person. बट एक्चुअल में आप कितना बना है जब रिकैलकुलेट किया आपने, जब आपने रिकैलकुलेट किया है, नाउ इट इज 17,58,383. It means whatever the balance, now you have to pay that tax to the government now because this is the additional capital gain or liability for that person, and for that he has to now give the tax to the government. So जो भी आपका rates discuss नहीं करे हैं, so whatever the rates applicable जो discuss करेंगे उसमें अप्लाई करके tax you have to pay to them. So these are the all points. This point बहुत छोटा सा point. Person dies during that process before receiving any kind of like initial compensation or additional compensation as may be the case, then such compensation will be taxable in the hand of the person whosoever receives it. So it could be legal here or his whatever the case may be, जिसको भी मिलेगा वो उसके हाथ में, it will be a tax liability for that person and he has to pay the tax to the government. ठीक है, सो अगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई मर जाता है तो it will be exempted, it will not be exempted. So जिस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है सेम प्रोसेस से कैलकुलेट होके, बट टैक्स लायबिलिटी जो जिसको भी मिला है पैसा उस पे लग जाएगी. So this is it. इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. चलो अब तुम्हें दोबारा जो डाउट होंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सैलरी और इसके मैं देख लूंगी बेटा, अगर मुझे मिलेंगे तो डेफिनेटली आई अपलोड. ठीक है, अदरवाइज मैं बुक दोनों रेफर कर रही हूँ तो मैं साइड बाय साइड मैं अच्छे क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लास में कराती हूँ जिससे कंसेप्ट क्लैरिटी आती है. अगर और होंगे तो डेफिनेटली आई कैन अपलोड इन द क्लासरूम. ठीक है, लेट मी जस्ट टेक द अटेंडेंस. Yeah, attendance is done. Oh, ma'am, ठीक है, what is the due date? 11:45 की क्लास है ना आपकी फॉर सैलरी असाइनमेंट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Salary assignment. बेटा इट वाज 9th October, Okay. फ्राइडे को